you may put forward your question. So, okay. So, is everyone clear? Any questions regarding this right now? If not, then Arindam No, sir, sir. you can we can start the session. Amrita, over to you. You may take a step forward and get started. Yes, sir. Amrita? Okay. Yes, sir. Am I visible, sir? Hello? Yes, Amrita. Go. Hello? Yes, sir. A very good Yes, morning madam, and you a are warm visible. welcome to teachers and students. I am Amrita Dharandale and I am pleased to introduce you all to our speaker for today, Mr. Arindam Das. He has been in the animation industry for the past 10 years. In this span, he has worked majorly in post-production. He has an extensive background in CGI, VFX, motion graphics composition, and has also worked as quality control and team management. Some of his projects are If on the Shelf, My Soul to Take, Thor, Captain America 2, Need for Speed, and many more. He has worked with companies such as Stereo D, Maya Entertainment Studios Limited, Red Chillies, Prime Focus, Network 18. Sir has been also awarded Best Film ASIPA Student category in the year 2008-9. He has a vast knowledge of industry and we are glad to have him. Over to you, sir. Thank you. So, good morning, all, my dear students and the staff members. So, first of all, I'd like to thank you all for giving me an opportunity to speak in front of you and share some of the experience with you. So, I will first of all I'll take you through the VFX experience or insight of how the process goes on in the industry. To start with, as already I have been introduced, so most of the experience I'll be sharing with, I'll be taking examples of Red Chillies, that is in Mumbai, and I have been to some of the projects like Ravan, Fan, Dilwale, etc. like this. So mostly my experience I'll be sharing with all the different departments and different pipelines. So basically, what is first thing is when we talk about VFX, basically, so what is pipeline, what is VFX, we'll be all covering up these things. And in the process, in the later half, I'll be showing you one of the simple example how the works are done in compositing a visual effects shot. So basically, I'll not take a very in-depth thing, but yeah, simple, quick tricks that you guys can also do, at least second semester or fifth semester students. So let me first share my screen. I'll give you a brief. So my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I hope you guys can see the presentation. Yes, sir. Yes, sir. It Okay. is visible. Thank you for confirming. So how the production process goes in a movie, I'll be explaining the things in a short. So most of you guys are aware, but yeah, some of them, the small things which are you will not get into the YouTube or tutorial or something. Those things I'll share with you because they are the real experience. And whenever you have questions, I'll be having a question answer round in the end. So whatever the kind of guidance you want, I'll be helping you out. And in between also, if you have any queries, just I'll give some time in between to ask those particular slot questions. So first of all,
what is VFX basically? What do you understand? Like we see very high-end VFX like Bahubali and Captain America, Marvel's Avengers, Avatar, and all these things. I'm just trying to say that nowadays VFX is not only Avatar, Bahubali, or high-end VFX. VFX is everywhere. It could be your simple thing, like maybe there could be a requirement of there are reflection on your specs. चश्मे के ऊपर reflections आ रहे हैं, so उसको भी निकालना पड़ता है. That is also VFX. So VFX is not limited to blast and all. Yeah, those are there, but yeah, VFX is not only those special effects and high-end VFX, but yes, of course, the VFX is required everywhere. Very small things are taken care into the VFX. Right now, if you see the advertisement industry, the movie industry, the OTT, this Netflix, and everywhere the VFX is used. Even nowadays, if you say pre-wedding things are also VFX, small VFX, snowfalls and all this. Maybe the background mountain, snow-covered mountains are there. So this kind of even pre-wedding shoots are also taken sometimes, giving the shot special effects. So basically, everywhere VFX is there, and it's not only about the high-end VFX, but it's a general necessity. It's not a showcase kind of thing, but it has become a requirement. So basically, visual effects nowadays has given the whole filmmaker a new perspective. Right now, from 80s, 90s, we started VFX in the Bollywood movies industry. Yeah, Hollywood, it has been started towards quite a long time ago. But gradually, 80s, 90s, we started. So initially, how the VFX started in Bollywood? Like, initially, we had to cut reels. Actually, literally, right now, nowadays, we have a digital platform. But previously, there was no digital platform, but there were actually physical rolls and reels. So negatives and reels. So that time, we used to, cut both the scenes and create one. And sometimes it happens that you might have seen in some of the black and white pictures, movies, Kishore Kumar or somebody else's, Chalti Ka Naam Gaadi kind of thing. So in those times, what they do is, they keep a car, both the characters are on the car, and they project something with the projector on the screen, like, so that if you feel like the car is actually moving and things are passing by. So from those times when the softwares were also not introduced, those times computers were not up to so much grade, high level. From that time also VFX was there, but we didn't recognize that. Nowadays what happens is people have very good awareness, and the industry which has boomed now. So it has moved to a certain different extent level where everything is high end now. So we are a good competitor. Even if you see the quality of Bollywood nowadays, it's quite high level as per comparison with the Hollywood movies also. So basically, where are VFX used? So basically the scope of work. So when we create a completely virtual shot मतलब कैसे होता है कि पूरा का पूरा जो शॉट है वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है. आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखे होंगे, लाइक आइस एज, टिंकरबेल, ये सब टाइप की जो मूवीज होती है स्पेशली डिज्नी के, तो कंप्लीटली कंप्यूटर के अंदर का वर्ल्ड रहता है. देयर इज नथिंग लाइव एक्शन. तो उस टाइम पे भी यूज किया जाता है. बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए बहुत सारे मूवीज में यूज करते हैं. पीछे एक्चुअली ग्रीन क्रोमा शूट में कर लेते हैं एंड पीछे जो है बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाता है. बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए भी यूज किया था. मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा थोड़ी देर में ही सबका. तो
बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया जाता है, फेक बैकग्राउंड कंप्लीटली, मतलब सीटी का सीटी क्रिएट कर दिया जाता है। क्रिएचर्स ऐड करना है, मतलब डायनासोर है, वो ये सारी चीजें जो क्रिएचर्स है ये सब भी ऐड कर दिया जाता है। एक्टर्स को चेंज करने के लिए यूज होता है। एक्टर्स मतलब डबल रोल कर रहे होते हैं तो वहां पे भी चेंज होता है। प्लस मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल, कुछ मूवीज में स्टंटमैन स्टंट परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हम लोग पूरा फेस चेंज कर देते हैं। सो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो बहुत टाइम ऐसा होता है एडिंग प्रॉप्स, एक्स्ट्रा जो चीजें होती है जो पॉसिबल नहीं है रियल टाइम रियल वर्ल्ड में, सो वहां पे वो प्रॉप्स या ऑब्जेक्ट्स जो होती है वो बनाया जाता है। किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट को निकालना होता है तो रिमूविंग ऑब्जेक्ट किया जाता है। ऑब्स्क्यूरिंग ऑब्जेक्ट्स, किसी चीज को अच्छे से दिखाना या उसको निकालना, मतलब ऑन द सीन। सो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन VFX। स्पेशलाइज्ड टाइम या स्पीड चेंजेस, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में स्पीड अप हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी मूवीज आप देखते हो कि जिसके अंदर लाइक सब कुछ रुक जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज देखा होगा आप लोगों ने। सो गाइज आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस फील्ड में हो, सो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो आप देखोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं। सो बेस्ट थिंग इज, चाहे वो कोई भी मूवी हो, मतलब एक प्रिंसिपल बना लो, चाहे वो कुछ भी हो आप देखो, चाहे वो एवेंजर हो या गोविंदा का कोई मूवी हो, कुछ भी हो, everything you see and you understand what is the difference between two things. So that is why डॉक्टर स्ट्रेंज में मैं था। So डॉक्टर स्ट्रेंज में आपने देखा होगा सारी पूरी दुनिया जो है वो रुक गई थी एंड जो कैरेक्टर्स है वो फाइट ऑन कर रहे थे। So this kind of specialized speed changes भी होते हैं। प्लस आप देखे होंगे जो बहुत सारी साउथ की मूवीज में आप देखते हो जब हीरो पंच मारता है एंड जो 4-5 विलेन उड़ के आते कैसे स्लो मोशन होता है एंड देन अचानक जाके पूरा जो है स्पीड अप हो जाता है। सो ये सारी चीजें जो है आपकी VFX में उसको दिया जाता है, स्पेशल इफेक्ट्स में दिया जाता है। सो और कोई भी सेट में प्रॉब्लम हो गया है उसको भी मतलब ठीक किया जाता है। सेट में प्रॉब्लम जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक्चुअली इंसान कहीं पे जंप नहीं मार पा रहा है बट उसके पीछे जो है वायरिंग्स ऐसा रहते हैं जिससे वो हैंग होके वो स्टंट परफॉर्म करते, तो वो वायर्स वगैरह निकालना और आई इफेक्ट, मतलब आपका जो कभी किसी और के थ्रू से, मतलब जैसे होता है ना कि कोई हॉरर मूवी है तो यू सी दैट, या दो कोई प्रे टाइप का कुछ है तो उसमें मतलब जो शिकारी है जो उसके आंखों से अगर आप देखते हो तो उसके कलर्स अलग होते हैं एंड उस टाइप का होता है। तो ये सारी चीजें होती है एंड ये सारी चीजें जो मेनली है VFX में यूज किया जाता है। सो नाउ डेज तो अभी तो आपने लोगों ने देखा भी होगा जीरो फैन ये सब में पूरा का पूरा इंटायरली बॉडी चेंज कर दिए जाते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दिया जाता है। सो दीज आर मेनली द स्कोप ऑफ वर्क फॉर VFX। सो VFX पाइपलाइन क्या होता है? पाइपलाइन इज नथिंग बट द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस के अंदर कैसे डिसाइड होता है प्रोसेस? स्ट्रेट फर्स्ट थिंग इज योर बजट। बजट कितना आपको मिल रहा है, सो उसके हिसाब से क्या आपको आउटपुट देना है। ऑब्वियसली अगर आप डिज्नी का एग्जांपल्स देखें, डिज्नी का या मार्वल्स के जो एग्जांपल देखें तो उन लोग का बहुत हाई एंड बजट रहता है। सो जो प्रोसेस में दे डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी, they want whatever they they don't want to compromise with quality. They hire or they purchase everything they want for that particular project. So अभी सबसे पहले जो होता है, अगर if you take example for बहुत common example है जैसे प्राइम फोकस। प्राइम फोकस is situated in Mumbai. That is one of the important, very important studios. कोई भी मूवी प्राइम फोकस, रिलायंस मीडिया, ये सब के मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर कंट्रीब्यूशन रहता ही है उनका। मे बी इट कुड बी कैमरा इक्विपमेंट्स, कलरिस्ट में भी कलर किया होता है, कुछ ना कुछ इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। विदाउट टचिंग दिस काइंड ऑफ स्टूडियोज इनफैक्ट मूवीज बहुत ही कम बने होंगे। सो मोस्टली अगर प्राइम फोकस की बात करें, सो इफ यू सी प्राइम फोकस एज अ वेरी गुड डाइवर्सिटी, मतलब उन लोग हॉलीवुड के हाई एंड प्रोजेक्ट्स भी करते हैं
एंड अगर थोड़ा लो बजट भी रहता है तो भी वो प्रोजेक्ट्स भी वो डिलीवर करते हैं. It all just depends on what kind of budget you have and what kind of pipelines. Pipelines is like what kind of softwares, क्या क्या जरूरत पड़ेगी. Obviously अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको एक बहुत शॉर्ट सा प्रोजेक्ट है, मे बी 1 लाख के अंदर आपका खत्म हो जाए, तो ऑब्वियसली आप ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं यूज करने वाले जिसका लाइसेंस ही उससे महंगा हो. सो ऑल एवरीथिंग हैज टू बी प्री प्लान्ड, किस तरीके से किया जाएगा. सो फर्स्ट थिंग इज बजट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी की भी क्या लाइन है. स्टोरी इन द सेंस वेदर इट इज अ नॉर्मल मूवी सीन, मतलब जैसे पूरा का पूरा एंटायर मूवी नॉर्मली है, जस्ट थोड़ा बहुत ही एक्शन सीन्स है. क्या आपका स्टोरी जो है वो बहुत ही एपिक टाइप का है, जो शूट करना मतलब एक्चुअली आपको लोकेशन करना पॉसिबल नहीं है. एपिक का मतलब एकदम हिस्टोरिकल या ऐसे टाइप की मूवीज, बहुत सारे सेट्स बनाते हैं, लाइक यू माइट हैव सीन इन पद्मावत एंड बहुत सारे संजय लीला बंसाली के सेट्स देखोगे, बहुत अच्छे अच्छे मूवीज का सेट बनाते हैं. बट समटाइम्स स्टिल वी रिक्वायर द VFX अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. उसके बाद जो मेन प्रोसेसेस होता है स्टोरी बोर्ड एंड एनिमेटिक्स होता है. पूरा जो है स्टोरी पहले ही डिसाइड करके ये पूरे प्री प्रोडक्शन में आ जाते हैं. मैं आपको कैटेगरी बता दूंगा. टिल R&D जो 6 पॉइंट R&D तक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक पूरा का पूरा जो है आपका प्री प्रोडक्शन में आ जाता है. तो इसके अंदर मतलब प्री प्रोडक्शन का मतलब आपका कोई भी शॉर्ट या मूवी ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करने से पहले का जो तैयारी होती है उसे हम प्री प्रोडक्शन बोला जाता है. सो स्टोरी बोर्डिंग एनिमेटिक्स का मतलब आप पूरा स्टोरी स्केचेस करोगे. एनिमेटिक्स मतलब उसको रख के रफली जो है पूरे एडिट प्रोसेस आप करके देखते हो, उसके अंदर क्या जरूरत है क्या नहीं है, ये सारी चीजें पहले ही डिसाइड हो जाता है. प्रीवियस मतलब प्रीवियस विजुअलाइजेशन हो जाता है. इसके अंदर कैसा है कि आपको पूरा एंटायरली लेआउट का कलर थीम कैसा रहेगा. मतलब बहुत सारी मूवीज आपने देखा होगा, लोग क्या सोचते हैं कि फोटोशॉप इज जस्ट फॉर ग्राफिक कंटेंट एंड सिर्फ आपको बैनर फोटो एडिटिंग एंड ये सब के लिए हुआ है. नहीं, आप अगर बहुत अच्छा फोटोशॉप एंड आपके अंदर क्रिएटिविटी अच्छा है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर प्री विजुअलाइजेशन या प्री प्रोडक्शन, जिसके अंदर आप जो मूवी का लुक एंड फील होता है, जो कलर टोनिंग होता है, वेदर अगर आप हॉरर मूवी देखे होगे दैट इज ऑल डार्क एंड फेडेड कलर रहता है. अगर उसी के जगह पे आप कोई रोमांटिक मूवी देखो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल शाम है गुलाबी, वो गाने को आपने देखा होगा, तो एवरीथिंग इज लाइक गुलाबी कलर, लाइक पिंक एंड एवरीथिंग. सो दिस इज हाउ गेरुआ में आप देखो जो दिलवाले का गाना है, उसके अंदर आप देखोगे तो एवरीथिंग इज लाइक गोल्डन एंड ब्लू. सो नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, तो गोल्डन आवर्स का ऐसा. तो ये सारी चीजें जो है पहले से ही पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट आर्टिस्ट एंड डिजाइन, ये सारी चीजें मिला के ये लोग तैयार कर लेते हैं. दे डोंट गो ऑन द लोकेशन एंड थिंक अबाउट इट. तो ये पूरा का पूरा रेडी होगा. तो आप लोग भी जब प्रोजेक्ट करो या कुछ करो, असाइनमेंट करो, मोस्टली प्रोजेक्ट की बात करूंगा मैं, तो उस टाइम पे भी आप लोग अगर प्री डिफाइंड होके काम करते हो, सो आपके एरर्स मतलब कम होंगे चांसेस एंड आपकी क्वालिटीज ज्यादा अच्छे होंगे. सो दीज आर द गोल्डन रूल्स काइंड ऑफ थिंग. सो इफ यू फॉलो दिस थिंग्स, लेआउट एंड प्रोडक्शन डिजाइन किस तरीके से रहेगा, मतलब सेट्स में क्या रहेंगे, किस तरीके से महल रहेंगे. सो हम लोग को लगता है कि हाँ ठीक है एपिक है बट या जनरल मतलब हाँ ठीक है, एपिक का मतलब आपको महल होगा या ऐसा टाइप के बहुत सारे सेट्स होंगे. या फॉर एग्जांपल मोगली जो आपका जंगल बुक था, उसके जंगल से, तो जंगल के अंदर भी बहुत स्पेशलाइजेशन है. मतलब ये कहाँ का जंगल है, इफ यू सी गो टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गुजरात, राजस्थान, ये साइड के जो जंगल है, इनके जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फ्लोरा फौना होता है, यहाँ का डिफरेंट होगा. इफ यू गो टू द नॉर्थ ईस्ट या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट विल बी डिफरेंट. सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस. सो उसी तरीके से जब इतना डिटेल्स तक देखा जाता है मूवी के टाइम पे बनाने से पहले, और एंटायर मूवी का जो सेट होता है, जो सेट का मतलब जो मूवी जहां पे हो रहा है लोकेशन, इफ इट इज अ CGI मूवी, तो पूरा का पूरा एंटायर सेट वहां पे
रफली एक जैसे हम लोग गूगल मैप बनाते हैं वैसे पूरा बना के रखा जाता है सामने। सो जैसे कोई मूवी है, जैसे फॉर एग्जांपल आइस एज है या जहां पे भी हो रहा है तो इसका घर यहाँ पे होगा, इसका बोलते ना प्ले ग्राउंड यहाँ पे होगा, ये सारी चीजें पूरा डिसाइडेड है। इस तरफ जो है वो माउंटेन्स होते हैं, सो दे डोंट रफली दे डोंट डू इट वेरी वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्री प्रोडक्शन के पोर्शन में। उसके बाद आपका मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग का पार्ट आता है, जहां पे आप लोग अगर 3D अगर है तो उसके अंदर ये सारे पोर्शंस आ जाते हैं। और नॉर्मल कभी कभी ऐसे भी होता है लाइव एक्शन के अंदर भी कुछ थोड़ा सा 3D का पार्ट है, तो उसमें भी आपको 3D मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग हो जाता है। रिगिंग एंड एनिमेशन, मॉडलिंग एंड टेक्सचर मतलब सिर्फ बनाते हैं और उसके ऊपर जो उसका ऊपर का सरफेस का टेक्सचर होता है बस उतना ही लगाते हैं। रिगिंग एंड एनिमेशन में क्या होता है कि बोन्स वगैरह सब फिट कर दिया जाता है एंड उसके बाद उसको एनिमेट किया जाता है, तो ये पोर्शंस है। इफेक्ट्स एंड सिमुलेशंस, स्पेशल इफेक्ट्स होता है जिसके अंदर आपके हेयर एंड फर है, स्मॉल पार्टिकल्स है, जैसे कोई बोलते हैं ना आग के छोटे छोटे पार्टिकल्स है तो वो भी उड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इफेक्ट्स एंड सिमुलेशंस में आ जाता है। अगर किसी का मतलब कोई फॉर एग्जांपल बेयर है, मतलब भालू है, तो उसका अगर हेयर सिल्की होगा कि रफ होगा, हार्ड होगा, अगर उसका मतलब कोई क्रिएचर का टेल है तो उसमें से जो हेयर्स होंगे वो कितना सेकेंडरी एनिमेशन होगा, कितना अच्छे से मतलब बोलते हैं ना सिमुलेशन, या क्लोथ्स वगैरह है, कपड़े होते हैं, उसके फोल्ड्स कैसे होंगे। कभी कभी देखना आप लो बजट में जो कपड़े होते हैं वो हार्ड मतलब बना दिए जाते हैं कैरेक्टर के बॉडी के साथ, हेयर जो है वो भी मॉडल किया जाता है, मतलब वो बना के मॉडल बना के रख देते हैं। सो दे डोंट एक्सपेंड मोर ऑन सिमुलेशंस। बट अगर आप हाई एंड प्रोजेक्ट्स देखोगे तो सिमुलेशंस मतलब जो हेयर के छोटे छोटे जो फ्लफीनेस है, बाउंसीनेस होता है कपड़ों के, वो सारी चीजें आप लोग को दिख जाएगी। एंड उसके बाद हो जाए लाइटिंग एंड रेंडरिंग, प्रॉपर चीजों को लाइट करना, ऐसे लगे कि वो रियल में ब्लेंड हो रहा है ओरिजिनल, एंड उसको रेंडर करके निकालना। सो रेंडरिंग के लिए भी पूरा का पूरा अलग एक डिपार्टमेंट होता है रेंडरिंग, जो सिर्फ आपका रेंडर करके सब सारी फुटेजेस को चेक करते हैं। अगर उसमें कोई करप्ट फ्रेम या कुछ आता है तो उसको वो लोग फिर से री रेंडर करते हैं या तो उसको शॉर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग के अंदर आपके डिफरेंट चीजों को लाके असेंबल करके उसको फाइनली जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है एडिटर्स से पहले, बिफोर रिलीजिंग द मूवी। सो ऑलमोस्ट कंपोजिटिंग में आपका हमेशा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पाइपलाइन रहता है, जिसके अंदर आपका मोस्टली जो है सारी चीजों को आप सॉर्ट आउट करते हो। उस टाइम पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं भी एक कंपोजिटर था पहले। सो द कंपोजिटर has to have a very keen skill, बहुत शार्प होना पड़ता है, because when any problem comes to you, so उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं रहता है कि वापस आप मॉडलिंग टेक्सचरिंग या कहीं पे भेजो। So towards the end the work comes to you and you have to somehow control and manage the things. So compositing is one of the important part. उसके बाद आ जाता है आपका मैच मूविंग। मैच मूविंग आपका एक्चुअली पहले ही होता है, जब सीन में कोई चीज दिया जाता है उससे पहले मैच मूव किया जाता है। मैच मूविंग इज लाइक एक रियल कैमरा जो मूवमेंट होता है उसके हिसाब से 3D का जो कैमरा है, क्योंकि 3D के कुछ सामान आप डाल रहे हो अगर सीन में, तो 3D का कैमरा भी उसी हिसाब से मूव होना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर चीज को आप ट्रैक करके उसके हिसाब से मूव करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज मैच मूविंग। तो मैं आप लोगों को एक आज दिखाने वाला हूँ सेकेंड हाफ में कि मैच मूविंग मतलब फेस के ऊपर हम लोग किस तरीके से ट्रैकर होता है एंड किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, एंड हाउ टू अप्लाई सम स्मॉल इफेक्ट्स विद फेस ट्रैकिंग। सो दिस विल बी देयर। सो लेट मी शो सम ऑफ द वर्क्स।
So this is one of the very old, work. Some of the work or shots which I have worked. I hope you guys can see my screen, the YouTube page. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's play them. These are very old works. So if you talk about this, let me first go through the whole showreel, then I will explain it.
So these are some of the very old works actually. Absolutely fantastic, mind-blowing piece of work, Arindam sir. Thank you so much. Totally overwhelming. 10 years. Just my eyes were stuck to the screen, and while the work is extraordinary, I always, at the same time, I always admire the actors also. They have a bigger task to do, in the sense that no one being around, they Yes. have to act so naturally. It is absolutely very surprising how they can do all those things without having a co-actor or without having anything, any surrounding. Yes. Just acting in front of a green screen in itself is a big task, and then you people giving this kind of look, which changes the picture entirely. Fantastic work, sir. Fantastic. Thank you so much, and appreciations to all the actors who actually does it so professionally. So just to explain, so basically these are all the VFX shots with all the elements and debris and all. These are actually the simulations and dynamics things. So some of them are done in 3D Max and some particles in Houdini and all, and composited in CGI VFX. So this kind of things are like face tracking helps for this kind of extra areas where this extra that wound, or what we call that technically, there was a blue things going on inside because it was a wound, because he has stopped the train and all. So these things are like done in VFX. And after that, CGI face replacement, like most of the actors don't have not in these scenes have not actually done the stunts, but they were done by the stuntman, but the actor's face were replaced with the 3D face, CGI 3D face. So this I was specially handling during the Ravan days, this particular all the face replacement tasks. So sometimes it happens that the entire body is not actually possible to hit and do this kind of stunt. So entire shot is CG. So these are major shots which I have worked, and these are completely virtual environment shots. So so these are the shots which I was talking about, completely CGI virtual environment. And yeah, so green screens, and towards the end, these are the works which I have done for, I was working with CNBC also. So CNN Event Network 18 basically. So when you go to the broadcast and motion graphics, one thing is like anywhere, if you are in production, you have to stick to your deadline. So my request to the students, all the students, is like stick to your deadline. So make it a habit from now on itself. Make it a lifestyle. So if whatever time you have given to submissions and all these things, please try to finish it off on that particular time. So this plays a very important role for your future things to deliver and all. So these are some of the motion graphics things. So basically mostly done in After Effects and 3D Max. So these things are it's very similar to the logo and all these things. So basically yeah, so these are most of the works which I have done. And right now we can have a small of question answer session. So any questions, please? You can pass the questions. And till then, if you are giving any, if you have any thoughts or questions, let me show you one more video. So this is we had worked for FAN as a QC supervisor there. So like my job role task was to, because all the body and every parts was shrinked, broader body
is shrinked into smaller because we want to show him as a 21-year-old boy. So for that, I have to check all these shots with, when the body shrink, there is a gap between. So all the roto and paint things I have to check. So you can see, let me play this so that you can see the things. So this is showing the actual difference between the actual and the created one. So before, you can see that the height of the character is still this point. You can see with the this border, and here you can see that the height has been decreased. So extra areas are created. Even if you can see the spot over here, the texture of the cloth, here it has been hidden. So actually this is the real shoot, but the body is compressed inside, and the gapping between there has to be created again.
Sir, you are not audible. So your mic is off. Yeah, sorry for that. Thanks for informing me. Actually, most of the part you might have seen that the background is, background is changed, and जो भी मैंने आप लोगों को बोला था बैकग्राउंड चेंज है, फिर क्रिएटिंग डुप्लीकेट कैरेक्टर्स. एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो शूट हो रहा है, दिस इज इन गोरेगांव रॉयल पाम एरिया, लाइक फिल्म सिटी. तो वहां पे शूट हुआ है. यू कैन सी दिस मुंबई इटसेल्फ. बट व्हेन it comes to the movie, it has been converted into the full पूरा का पूरा सिटी बना के अब्रॉड का दिखा दिया है. So this VFX has a vast, contribution in this today's movie. So ये ऐसा theater होना possible नहीं था. So पूरा बना के इस टाइप का. एंड यहाँ पे आपने देखा होगा ट्रेन वाला शॉट. यहाँ पे फेस का जो ये मार्कर्स है ये सारे भी रखा जाता है, बिकॉज फेस को हम लोग जब ट्विक करते कुछ करते हैं उसके ऊपर, जैसे 3D नोज है, ये रियल नोज नहीं है, 3D नोज है, तो उसको हम लोग जब करेंगे मतलब मैच करेंगे तो उसके मोशन के साथ मैच होना चाहिए. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. सो ये मार्कर्स बहुत लोगों को रहता है कि सर हम लोग कर तो लेते हैं ट्रैकिंग वगैरह, लेकिन मार्कर्स रिमूव नहीं होते हमसे. ये छोटे छोटे मार्कर्स होते हैं जो डॉट्स होते हैं वो रिमूव नहीं होते. तो मैं आज आप लोगों को वो दिखाने वाला हूँ किस तरीके से करने वाले. सो लेट मी शेयर विथ यू वन मोर. सर एक दो क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के. Yes, please. Yeah, I was waiting for the questions. Yes, how to handle stressful situations and pressures, like when there is a very strict deadline? So first thing is pressure will always be there. Like अगर आपको मतलब एक छोटा सा टास्क भी दे देते हैं एंड 1 month का टाइम होता है, still you will it's a human tendency generally, always you will feel pressure. So basically what happens is when you take a task like in production, so उस टाइम पे सबसे पहले जो आप टास्क लेते हो, first you have to prepare for the what is going in, what exactly they want. सबसे पहला क्वेश्चन, what you are going to do, what you are supposed to be, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है. अगर वो चीज आप वर्कआउट करो पहले, और अगर आप वो चीज वर्कआउट नहीं करते हो तो आप कुछ गलत बना देते हो एंड अप्रोच करते हो कि ये मैंने बनाया, तो वहां पे आपका पूरा टाइम, बोलते हैं ना, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस. फर्स्ट थिंग इज आपको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा जो भी टास्क दिया है, वेदर इट इज अ शॉर्ट और एनीथिंग. सो शॉर्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, शॉर्ट का चैलेंजेस क्या है, पहले वो अंडरस्टैंड करो. और once you understand the short, third step will be your the ways, the path, कौन से process. So there could be thousands of process to approach that shot or handle that shot. What will be the best? So initially आप लोगों को थोड़ा तो तकलीफ होगा. When you are experienced enough, तो धीरे धीरे ये this develops within the time. So थर्ड प्रोसेस वुड बी, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था अभी, कि कौन सा तरीका है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे बट श्योर शॉट जो तरीका है वो रास्ता आपको ज्यादा सर्टेनिटी देगा, rather than क्विक फिक्सेस करने जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, टाइम पे टाइम निकलते जाता है एंड क्विक फिक्सेस, एवरीथिंग हैज टू बी रीडन अगेन. सो दैट टाइम यू लूज द टाइम. सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो थोड़ा सोच समझ के स्टार्ट करने से पहले, झट से आप, अचानक होता है कि इनिशियली जब आप जाते हो ना कि अरे मैंने ये वाला देखा था, एग्जांपल इस तरीके से होगा. डोंट जंप इनटू वन सिंगल वे टेक्निक. जस्ट एनालाइज द शॉट, व्हाट आर द चैलेंज, क्या क्या हो सकता है, क्रॉस चेकिंग करना बहुत जरूरी है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू लूज द 50% ऑफ टाइम एंड देन यू कम टू कंक्लूजन दैट अरे ये तरीका तो हो ही नहीं रहा है.
So that is the key features. Then after that, your time management. आपको slotting divide करना रहेगा and always keep a buffer time कि आपके पास वो कुछ ना कुछ reviews या kickbacks आएंगे ही आएंगे. So we generally we don't consider those time. वो सबसे बड़ा गलती होता है हम लोग को. तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि वो किकबैक आता है, उसका करेक्शन करने का अपने पास टाइम नहीं है, यू मिस द डेडलाइन. सो ये 4 स्टेप्स है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है. जो अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो डोंट कीप वेटिंग एंड कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग. इफ यू वांट हेल्प, just approach your lead or supervisor at once when you feel that it's alarming, मतलब आपका हो नहीं रहा है, होने का थोड़ा डर लग रहा है, whether this way is approachable or not, तो तुरंत पूछ लो. So they might be more experienced person, they are working with you, so they will guide you, definitely help you out. I hope I have. We have our next question. Which are the topmost companies for VFX and animation? Okay, so mostly like every company, like topmost company in world or India, so it depends on, like most of the MPCs, Prime Focus, and these all companies are very good. And Red Chillies are from India, Prime Focus is from India. So if you talk about Double Negative is working with Prime Focus, some DreamWorks are there. So there are various lot of companies. So there is nothing called best and not best, but yeah, these are the big companies. Yeah. Can we have next question? How to prioritize all projects to meet up multiple deadlines? How to prioritize all projects? To meet multiple deadlines. To meet multiple deadlines. First priority, start with the easiest one or the toughest one. It depends on your process. So whichever is accessible. So that way you can, Okay, sir. Next question. What is the difference between VFX artist and compositor? VFX artist is like, VFX is a, whole, what kind of, it's a colony. So visual effects is like, there are 3D artists, there are simulation artists, there are dynamics artists, there are matte painters, there are Photoshop artists. So everyone in a production which are creating a visual effects is called as VFX artist. And a compositor is a special tasker which takes all the things and compile one and makes a shot which looks real. So 3D, raw 3D, if you take the raw 3D output, it will not look real. So to make it look real, the compositor works. What difficulties you faced while your career? Difficulties are always there. So it's not about me, or everyone will face difficulties. There are lots of different challenges. Like in our days, there were no YouTubes, no free internet data and all these things. So we used to go to the cyber cafe and apply for the very limited companies were there, and we used to physically write DVDs and send them through courier physically, after your showreel is selected, we have a lot of competitors, and after a lot of days we get the chance to, they call us and we give tests, and tests are like, the more the experience you have, the more toughest test you will have. So for Red Chillies, I used to remember I was giving test, that those days were like, I was working with Prana and I was giving test in Red Chillies 3 days with 101 or 102 fever. I was giving a test and it was a very long shot. I had to do all the motion tracking, capturing, rotoscopy, green screen removal and blending. Everything was like, that was a Devanathan shot, I guess. In the terrace, the water was flowing and Johnny Lever and 11, 12 characters were there. So I had to, okay. I guess Sanket will right now, let's move to the next session, and then we'll have this question answer session in the later half. Okay, so I'll answer your questions the first. So let me share the screen. I will
just remind me, Sanket. I'll answer your first. I will start with you. So let me show one. Example, what we are going to do today. We are going to do the face. So what kind of face tracking? See. तुम मेरी प्रतीक को बचा लो। Of course. मैं जीवन इसीलिए तो बना। So I will not be making all this because these things are made in Houdini. जो अंदर का दिखा रहा है, ये actually this Houdini का एक सॉफ्टवेयर आता है 3D माया के जैसा. So वहां से बन के आया and it was later composited. So ये tracking होके आता है, but I will show how to track it in software like New. So let me switch my PC. And I'll turn off my camera so that you guys can see the whole screen. I hope I'm visible now. I mean, my screen. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is a software called New, which is currently used in all the Hollywood and Bollywood movies, most of the things. So we can have a small. This is not a very advanced thing because all the I have to look for all the students from the first year to final year. So I just choose a topic which is very common and very easy to do. So yeah, first year obviously they will not be able to do. But yeah, later on, just have a look how the process is. Process is universal always. Whether you take Nuke or After Effects or any other compositing software or any software, the process, the thinking process and the working process are always same. Just the software layout is different. So I'll be creating one view, something like this, and I'll show you the actual shot. And this is what. This is called a node-based software, which is New. We have the left on the toolbar, and this is a viewer area, and this is called as node graph. So in After Effects, Photoshop, we have layers. In New Fusion, this kind of shape, we have nodes. So one connected to another, like this. So this is like simple, like going up and down. There are arrows, so which indicates that information is flowing from where. One is A is foreground, B is background, kind of thing. And there is one mask. So basically, if it may feel you difficult a bit, but just see the process, how it is done. And let me show you the original one. So this was the original one. This is a shot. There is a very shaky shot, and it will be a bit difficult to track all these things. And what I had made is like this thing. So you can put your own fiery effects and all these things, but that whatever you want, it's your creativity. You can put it. I have just taken an example and show how to face track these things. So let me just copy this footages separately. So this is one our footage. So we need to track first. So first of all, in Nuke or any compositing software, it is very important. Just generally students and initially learners, they just keep the main important thing, which is your resolution, the setup. So what is the footage? This is HD 1920 by 10. So my canvas size or COM
in After Effects or project setting in Nuke should be same. Otherwise, your whole process will be, not workable. So this is the first most important step. Cool and calmly, don't miss this thing, because otherwise your whole work will be like बहुत खराब हो जाएगा scene. So पूरा करने के बाद you will find that आप पूरा wrong काम किए हो. So first thing is you take the footage, understand what is happening. So first, if I need to do anything with the face or paste any kind of graphic or sticker or anything, we need to first track the motion. Otherwise क्या होगा, जैसे मेरा माउस अभी एक जगह पे अटका हुआ है, उसी तरीके से अटका पड़ा रहेगा, आपका ट्रैक नहीं होगा. ये जो मूवमेंट हो रहा है इसके पॉइंट्स के साथ, ये इसलिए ये ट्रैकिंग यूज किया जाता है. सो फर्स्ट थिंग इज, लेट मी फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप द कॉम. नाउ सबसे पहले मुझे इसको ट्रैक करना पड़ेगा. हम लोग दो काम करेंगे यहाँ पे. एक तो एक्स्ट्रा ग्राफिक्स डालेंगे जो इसके फेस के साथ ट्रैक होगा, और दूसरा काम होगा ये ट्रैकर को मिटाना भी तो है. ये ट्रैकर को डिलीट भी करेंगे एंड क्लीन अप कर देंगे, सो दैट हम लोग का फाइनल फेस जो है इस तरीके से दिखे, इसमें कोई ट्रैकिंग पॉइंट्स ना हो. सो मैंने यहां पे ले लिया इसका फर्स्ट. सो फर्स्ट लेट मी टेक ये टाइप का जो एनालिसिस है. अभी देखो, फर्स्ट थिंग इज द वे यू गाइस हैव क्वेश्चन मी ना, तो वैसे ही सिमिलर हो रहा है. देयर आर 3 डिफरेंट वेज. ईदर आई व्हाट काइंड ऑफ ट्रैकिंग आई शुड यूज. जो लोग थोड़ा हाई सेमेस्टर में पहुंच गए, आप लोगों को पता होगा. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैकिंग. वन इज सिंपल ट्रैकिंग, पॉइंट टू पॉइंट ट्रैकिंग, मतलब उसके अंदर आप सिर्फ सिंपल तरीके से ये ट्रैक कर सकते हो. दूसरा है ट्रैकिंग जिसके अंदर आप 3D एडवांस ट्रैकिंग है, और तीसरा है जिसके अंदर प्लानर ट्रैकर होता है. तो प्लानर ट्रैकर क्या करता है, सिर्फ टेक्सचर को पकड़ के उसको ट्रैक करेगा. मतलब ये 4 डॉट है तो 4 डॉट को एज अ टेक्सचर पकड़ेगा. 3D हाई एंड ट्रैकिंग क्या करेगा, वो मल्टीपल पॉइंट्स लेके उसका फेस का मूवमेंट डिटेक्ट करेगा. जनरली वो हम लोग तब करते हैं जब हम लोग 3D सीन, कैमरा मूव हो रहा होता है तब करते हैं. तो वो तरीका मेरे लिए रिजेक्ट हो गया पहले ही, हाई एंड 3D ट्रैकिंग, एडवांस 3D ट्रैकिंग. बचा क्या, 2 प्रोसेस. एक तो प्लानर ट्रैकर जो आपका टेक्सचर को ट्रैक करता है, दूसरा सिंपल ट्रैकर. सिंपल ट्रैकर क्या करता है, पिक्सल को पकड़ के ट्रैक करता है. तो मैं सिंस वो आप धीरे धीरे वर्क करते करते समझ जाओगे, सो मैं क्या करूंगा, ये जो ट्रैक्स है इसको मैं सिंपल ट्रैकर से रिमूव करूंगा, मार्क्स को, और टेक्सचर जो डालूंगा दैट विल बी माय प्लानर ट्रैकर. सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं पहले टेक्सचर को डाल देता हूं इसके ऊपर. सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ प्लानर ट्रैकर. मैं टैब दबाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में आप इफेक्ट्स ढूंढ पाते हो, वैसे यहाँ पे टैब दबाते तो प्लानर ट्रैकर यहाँ पे आ जाता है. सो इसको आपको कनेक्ट करना रहता है. यहाँ पे डबल क्लिक करो तो आपको देखो ये रोटोस्कोप जैसे दिखता है. रोटोस्कोप इज लाइक मास्किंग. तो यहाँ पे ट्रैकर के पैनल्स हो जाते हैं. आपको क्या करना है, सिंपल एक पॉइंट्स को इस तरीके से कुछ बनाना है. मैं सोच रहा हूं कि मैं इसका पूरा फेस के ऊपर ही कर देता हूं. सो आई विल टेक पॉइंट्स लाइक दिस. सॉरी, आई नीड टू टेक वन मोर. सो मैं पूरा फेस के ऊपर ही करूंगा. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं सोच रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट पे नहीं करूंगा. आप देखो, एनालिसिस करो शॉट. पहले में फेस झुकाया हुआ होता है तो दैट मे क्रिएट अ मिस्टेक. सो मैं क्या करूंगा, उल्टा काम करूंगा. फ्रेम नंबर 50 मतलब एंड से पहले स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फेस सीधा है. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंकिंग प्रोसेस विच आप लोगों को समझना पड़ेगा. सो मैं पूरा फेस को यहां से कैप्चर कर लूंगा. सो आई एम मार्किंग द एरिया विच आई एम गोइंग टू ट्रैक. तो यहां का टेक्सचर पकड़ेगा एज अ प्लानर ट्रैकर.
दूसरा, जब भी आप मास्क करते हो कभी भी ह्यूमन बॉडी में, डोंट मेक वर्टिसेस, शार्प वर्टिसेस मत करो, देयर शुड बी हैंडल्स ऑलवेज, बिकॉज सी ये बहुत शार्प है तो मैं इसको हैंडल बना लूंगा. सो दिस आर स्मॉल थिंग्स व्हिच यू शुड फॉलो, क्योंकि ऑर्गेनिक बॉडी के अंदर आप अगर वर्टिसेस बनाते हो तो कभी भी आपका शॉट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब शार्प कहीं ना कहीं दिख जाएगा. सो बेटर इस तरीके से कुछ बना लेते. एंड मैंने ये मार्किंग एरिया कर दिया है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज गोइंग टू ट्रैक रिवर्स. उल्टा किया है ना मैंने, फ्रेम नंबर 50 पहले कर दिया, अभी 1 की तरफ जाऊंगा तो रिवर्स तरीके से जाऊंगा मैं. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस. डोंट वरी फॉर द सॉफ्टवेयर, आप लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली जब सेमेस्टर के हिसाब से चले जाओगे, जस्ट लुक एट द प्रोसेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ये यहाँ पे रिवर्स कर लूंगा. सो पूरा शॉट नहीं, 1 to 50, एंड जैसे मैं करूंगा इसको ट्रैक, ये ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा. आपको क्रॉस चेक भी करता रहना पड़ेगा कि ये सही हो रहा है कि नहीं. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. सॉरी, स्क्रीन विजिबल नहीं है. स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है. सर विजिबल नहीं सर, है. visible है. अभिषेक प्लीज चेक योर कनेक्शन, यू माइट हैव सर टू विजिबल है. विजिबल तो है. Abhishek, just log out and log in once again quickly. ओके सर. Yeah. मैं सेकंड मशीन से मैं देख पा रहा हूँ अपना स्क्रीन को. स्क्रीन विजिबल है सर, स्क्रीन का इशू नहीं है, स्टूडेंट का कनेक्शन का इशू हो सकता है थोड़ा सा. ओके. यस सर, इट इज विजिबल नाउ. गुड. सो बेसिकली हम लोगों ने इसको ट्रैक किया है. सो ये थोड़ा सा हेवी है, तो पहले क्या होता है, हमेशा अपना जो स्प्लाइन होता है या शेप हम ड्रॉ करते हैं वो अपना शेप चेंज कर लेता है एंड फुटेज थोड़ी देर बाद करता है. सो ये हो गया यहां तक. सो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा ट्रैकिंग हो गया इसके पूरे फेस पे. सो ये मेरा ट्रैकिंग होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रैकर तो ट्रैक कर लिया है. ट्रैकर कभी भी आप डिलीट मत करना. मैंने आपने देखा है, मैंने फ्लो को अंडरस्टैंड करो, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें रखी है. ट्रैकर शुड ऑलवेज बी केप्ट देयर इन द प्रोडक्शन शॉट. ये कभी भी आप ध्यान रखना, याद रखना, कोई भी चीज ऐसा होता है जो इन्फॉर्म है, डोंट रिमूव इट इन द शॉट, बिकॉज आपके जगह पे काम पे या कुछ करेक्शन आया तो देन यू डोंट हैव टू ट्रैक अगेन. और ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन एक बार परफेक्ट निकालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपने अगर डिलीट कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. सो कीप दिस ट्रैकर हियर, गो हियर. जिन लोगों को भी न्यू टाइप का है, मतलब अगर आप लोग को फर्स्ट लेट मी सेव दिस, ये सबसे पहला रूल है, सेव करते रहो एंड सेव एज अ न्यू कॉम वर्जन हमेशा. तो मैं इसको नेमिंग करूंगा फेस ट्रैकिंग अंडरस्कोर V. तो न्यू में अंडरस्कोर V करना पड़ता है. सेव करो, देन ओनली आई कैन सी फेस ट्रैकिंग अंडरस्कोर V आया. नाउ आई कैन सेव एज न्यू कॉम्प वर्जन. आई हैव टू गिव V1 एक्चुअली. Save. So now I'll be able to save new comp version. Now it's V2. तो वर्जन्स में काम करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि करप्ट हो जाता है. एंड एवरी डे यू हैव टू अपडेट योर फाइल. सो सबसे पहले मैंने ये फेस ट्रैक कर लिया है, एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा एंड यहाँ पे मेरे पास कॉर्नर पिन, मतलब दिस इज अ ट्रैकिंग. तो इसके अंदर मुझे कॉर्नर पिन्स, मतलब मेरे जो पॉइंट्स होते हैं उसके हिसाब से वो इमेज को एडजस्ट करेगा. सो व्हाट आई विल डू इज कॉर्नर पिन 2D एब्सोल्यूट मैं यूज करूंगा. तो ये जो है ये लिंक अप रहेगा. सो देयर इज अ E, दैट मींस एक्सप्रेशन है, मतलब दिस नोड इज अ चाइल्ड एंड दिस इज द पेरेंट एंड इट इज टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट जो हम लोगों ने ट्रैक किया. एंड इस चाइल्ड के ऊपर आप देखोगे ये पूरा एनिमेशन है, एनिमेटेड की.
सो आपको पॉइंट्स भी दिख रहा होगा। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रैक का ये पोर्शन निकाल लिया। सो ना उसके बाद मैं एक फायर वाला इफेक्ट ले लेता हूं यहाँ पे। मैं बस फुटेजेस को इंपोर्ट करके रखा हूं सो दैट आई कैन सेव सम टाइम। सो यहाँ पे ना एक फायर का इफेक्ट है ये पूरा, तो मुझे पूरा का पूरा इमेज नहीं डालना है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फर्स्ट मेक अ रिफॉर्मेट, क्योंकि फिर से मैंने आप लोगों को बोल रहा हूँ कि रिफॉर्मेट करना बहुत जरूरी है, मतलब आपका साइज में, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। 1920 by 1080। नाउ यू गो टू द रोटो एरिया, मास्किंग करेंगे इसको क्योंकि पूरा एरिया हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना एरिया चाहिए। सो आई विल मास्क इट आउट। तो मैंने इसको मास्क बना दिया, यहां तक रखा। थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं, इसको मैं अब मास्क करूंगा। इसको बी में लगा दिया, इसको ए में लगा दिया। दिस इज अ मर्ज नोड। जैसे लेयर पे हम लोग सिर्फ एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर रखने से हो जाता है काम, यहाँ पे नोड बेस्ड पे नहीं रहता है। यहाँ पे ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं होता है, ऑल द कनेक्टिंग लाइंस वर्क्स। तो यहाँ पे बी मतलब बैकग्राउंड आ रहा है, यहाँ से ए फोरग्राउंड आ रहा है, एंड यहाँ पे हम लोग जो मोड होता है, जैसे फोटोशॉप में मोड होता है स्क्रीन मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें तो यहाँ पे हो जाता है। न्यूब के पास भी ये सारी चीजें है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे मास्क। तो अब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो मुझे ये मास्क हो गया, तो एंटायरली अनवांटेड एरिया जो है वो कट हो गया। सो इस मास्क को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने एक मर्ज लूंगा, इस जो फेस वाला शॉट है उसको बी में कनेक्ट कर दूंगा, इसको मैं ए में कनेक्ट कर दूंगा, एंड आई विल सी फ्रॉम हियर। तो आप देखोगे तो ये इस तरीके से ओरिजिनल जस्ट उसके ऊपर आया हुआ है। नाउ नथिंग हैज बीन डन। नाउ व्हाट आई विल डू, ये जो हम लोगों ने निकाल के रखा था कॉर्नर पिन, ये क्या करता है आपका पर्सपेक्टिव को मैच कर देता है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया। सो राइट नाउ यू कैन सी दैट द पोर्शन इज ट्विस्ट एक्चुअली। तो ये क्या हो गया कि ये एंटायर इमेज को ले रहा है, सो दैट्स व्हाई ये इस तरीके से हो गया। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैं एक ट्रांसफॉर्म मतलब बोलते हैं ना एक स्केलिंग करना, वो ले सकता हूं यहाँ पे, एंड यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको स्केल को विड्थ वाइज बढ़ा सकता हूं, डबल कर सकता हूं, एंड यू कैन एडजस्ट इट अ बिट, एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आ जाए। फिर एक बार चेक करते हैं। नाउ इट्स वर्किंग। तो आपका पूरा जो मेन जो काम था वो ट्रैक का, वो ट्रैक हो गया। मे भी हम लोग को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है, माइनर ट्विकिंग, लाइक ट्रांसफॉर्म में जाके मैं थोड़ा सा इसका जो एंगल है उसको घुमा दूंगा। सो रोटेशन, शायद थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ेगा। और ये मास्क को भी थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, थोड़ा ज्यादा ही नीचे आ गए। सो माइनर ट्विकिंग वी हैव टू एडजस्ट। सो एक बार प्ले करके देखते क्या बना अभी तक। इसी की जगह पे आप अपना प्रॉपर फायर वाला फुटेज भी यूज कर सकते हो, तो वो फायर जलते हुए दिखेगा आपको। तो दैट वे वी कैन वर्क। सो दिस इज ट्रैक्ड। सो नाउ अभी ये जो मास्क दिया है मैंने, इसको ना मैं थोड़ा सा श्रिंक करूंगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ बिट थोड़ा बाहर ज्यादा जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा। कॉर्नर पिन के वजह से वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है मेन फ्लो पे। सो ये डोप शीट होता है। डोप शीट में आपको की फ्रेम्स मिल जाते हैं।
सो कोई भी नोट का की फ्रेम आपको मिल जाता है डब शीट पे। गो टू द फर्स्ट फ्रेम। यहाँ पे जो की फ्रेम आपको नहीं चाहिए आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। इसको डिलीट कर दो। गो टू द लास्ट फ्रेम। मैंने ये शेप एडजस्ट किया था लेकिन प्रॉपर्ली हुआ नहीं था, तो आई एम डूइंग इट अगेन। अब ये होने के बाद कभी भी देखना, कभी भी हार्ड एज मत रखना इसके अंदर। मेक इट बिट सॉफ्ट एंड एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ से आप ब्लर नोड भी लगा के कर सकते हो, थोड़ा सा ब्लर, सो दैट कि जो हार्ड एज था वो मिक्स हो जाए। नाउ एवरीथिंग इज डन। सो फ्रॉम फर्स्ट, सो एवरी मोशन इज ट्रैक्ड। अगर आपका इंटरनेट अच्छा हो तो आप रियल टाइम देख पाओगे, अदरवाइज थोड़ा जर्की लगेगा आपको फुटेज देखने में, रियल टाइम वीडियो प्ले नहीं हो रहा होगा। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, बहुत सिंपल तरीका है। मैं यहाँ पे फिर से मास्क लूंगा उसको इफेक्टिव टाइप दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे मास्क करके ये यहाँ पे लगा दूंगा फिर से पहले की जैसा। ये बी होना चाहिए, ये ए होना चाहिए, एंड यहाँ पे फिलहाल डिसेबल करके रखा ताकि मैं वर्क कर पाऊँ इसके ऊपर। एंड इसको बाद में मैं ओवर की जगह पे मास्क कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं काम करूंगा इससे कॉर्नर पिन से पहले ही मैं करता हूं, सो दैट कि मुझे डिफिकल्टी ना हो ट्रैक करने के लिए। सो कंट्रोल एक्स, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पूरा फ्लो होता है, ये जैसे आपके गूगल मैप में रोड्स नहीं होते, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ पे, उस तरीके से ये तरीका रहता है। दिस इज जस्ट द वर्क फ्लो और इंफॉर्मेशन जहां से ऊपर से स्टार्ट होता है एंड नीचे जाके खत्म होता है। इट वर्क्स लाइक दैट। सो नाउ मैं यहाँ पे रोटो में आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एक मास्क क्रिएट करना है रैंडमली ऐसा। एंड क्लोज इट द शेप। इसको ऑन कर दो। अब ये मास्क क्रिएट करने की वजह से क्या हो गया, ये इस तरीके से हो गया कुछ। अब इस मास्क को भी हम लोग थोड़ा फेदर दे देंगे, बहुत हार्ड है। ये मास्क क्यों क्रिएट किया, ताकि कुछ जगहों से दिखे कुछ जगहों से नहीं दिखे। तो ये इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 50 पे है, यहाँ पे 1 पे आते आते ना इसका एरिया मैं चेंज कर दूंगा। लाइक ये ऐसा कर दूंगा। रैंडमली आप कर सकते हो जैसी भी आपकी, वो आपको थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा कि आपको कौन सा वाला अच्छा ज्यादा लग रहा है, किस टाइप का आपका जो सैंपल है वो सही लग रहा है देखने में। फिर बीच में इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फेदर ब्लर थोड़ा देना पड़ेगा, अदरवाइज आप देख रहे हो कट एजेस ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। सो ब्लर देके मैंने इसको भी 20 पिक्सल का ब्लर लगा दूंगा। सॉरी, हमेशा वर्क जब भी करो नीट एंड क्लीन रहे, स्ट्रेट रहे, ताकि आपके कॉम्प पे कोई और आके बैठ के भी काम कर सकता है। जब आप अभी ड्यूटी पे नहीं हो बट वहां पे करेक्शन आया है क्लाइंट से, तो कोई और भी आपके काम पे बैठ पाए। नहीं तो क्या होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीम टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। एंड आप शॉट अच्छे करो या ना करो, लेकिन ये सारी चीजें बहुत अच्छा मतलब मेंटेन, मतलब इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं कंपनीज में। अदरवाइज आप कितना भी अच्छा आउटपुट लो और आपका जो अगर फ्लो खराब है या आप जो वर्क करते हो वो बहुत खराब तरीके से करते हो, so nobody will, it will be difficult for the team to handle. So यहाँ पे ये जो है ये मूव होते जा रहा है, तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। आप चाहे तो और थोड़ा सा ब्लर बढ़ा दो, इसका बहुत कम है ब्लर। इट कुड बी 40, स्मूथ हो जाएगा, मे बी 60। So let's see how is it going. So फॉर्मेशन कैसे भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। मेरा तो मेनली वो दिखाना है कि आपको
मेन जो काम है, पर्पस है, वो किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। सो एज आई टोल्ड, देयर आर मल्टीपल वेज तो आपको ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये फेस के इंटरफेस का टेक्सचर को ट्रैक करेगा, तो प्लानर ट्रैकर मैंने यूज किया है। सो यू कैन शो दिस काइंड ऑफ शॉट्स, लाइक उसके अंदर डेमन आ रहा है या ऐसा कुछ पावर आ रहा है। सो नाउ दिस थिंग इज सॉल्व्ड। नाउ व्हाट अबाउट स्मॉल ट्रैकर्स? आप इसके ऊपर इसी सेम तरीके से कट्स भी लगा सकते हो। मैं पहले ट्रैकर रिमूव कर दूंगा। सो ट्रैकर रिमूव करने के लिए सबसे पहले मैं फिलहाल के लिए इसको मैं डिसेबल कर दूंगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, जो अभी जरूरत नहीं है उसको आप या तो डिसेबल करो या तो डिस्कनेक्ट करके रखो, सो दैट आपका कॉम्प हेवी ना हो। सो सबसे पहले आपको ट्रैक यूज करना है, इनको निकालना है आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिंपल ट्रैकर यूज करूंगा। आई गो टू यूज अ बेसिक ट्रैकर। सो इफ यू टेक द रॉन्ग प्रोसेस, तो आपका पूरा जो वर्क है वो आपका खराब हो जाएगा। सो आई नीड टू कनेक्ट दिस विद द फुटेज, तो मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। सो दिस इज सिंपल ट्रैकिंग, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स में जैसे होता है। सो मैंने यहाँ पे इसको ट्रैक कर दिया एंड यहाँ पे आई नीड टू ट्रैक द रेंज, तो ये आपका ट्रैकिंग हो जाएगा। सो आपका ये मूवमेंट हो गया, क्रॉस चेक कर लो आपका मूवमेंट, तो प्रॉपर जा रहा है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये ट्रैकर को मैं साइड करके रख दूंगा। अभी मुझे क्या करना है, एक नया मर्ज लेना है मुझको। ये वाला मर्ज जो है, कनेक्शन जो है, ये तो इसके लिए था। उस नए मर्ज को मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं अपने लिए, यहां पे लगाऊंगा बीच में। सो ये मर्ज में मुझे ये बी बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड आ गया। अब यहीं पे मैं एक फिर से कनेक्शन लूंगा, इसका जो फोरग्राउंड होगा वो भी सेम फुटेज। क्यों लिया मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। सेम फुटेज, तो मैंने फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड सेम चीज मैंने ओवरलैप कर दिया। तो मुझे ये ऑटो अल्फा ऑन है, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहां पे सेम फुटेज मैंने कॉपी किया। क्यों? क्योंकि या तो आप स्टैम्प कर करके, क्लोन कर करके करो पूरा फुटेज, तो आपके पास ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी एक तरीका है। यू आर आस्किंग ना व्हाट इज द राइट प्रोसेस एक्चुअली। सो राइट प्रोसेस इज लाइक, विथ योर एक्सपीरियंस यू कैन नो, इफ आई कीप स्टैंपिंग, मैं इसको अगर रोटो पेंट करता बैठूंगा तो मेरा 50 फ्रेम्स करने में 1 घंटा यहीं पे निकल जाएगा, और आप लोग सब सेमिनार छोड़ के भाग जाओगे। तो मैं क्या करूंगा, द बेस्ट वे एंड द अप्रोप्रिएट वे इज, मैं एक ट्रांसफॉर्म लूंगा। ट्रांसफॉर्म मतलब आपको शिफ्ट करना होता है, ये शिफ्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया बेसिकली साइड वाइज। तो एक्चुअल फुटेज को मैंने साइड वाइज कर लिया इस तरीके से। तो ये ट्रांसफॉर्म तो मैं करूंगा, बट कौन से एरिया में वो इफेक्ट होना चाहिए, फोरग्राउंड मास्क के थ्रू से आना चाहिए। यहाँ पे तो एक मास्क मैं ले लूंगा इतना सा पोर्शन को ठीक करने के लिए, इतना सा पोर्शन में काम करे वो, मतलब बैकग्राउंड फोरग्राउंड, फोरग्राउंड उतना सही एरिया से दिखेगा जितना एरिया में मैं ये मास्क डिफाइन कर दूंगा। सो आप अभी आप देखोगे, मैं ऑन करूंगा तो ये शिफ्ट हो गया। तो मैं अगर इसको 0 कर दूं वापस से, तो आप देखोगे सेम जगह पे आया है। और मैं इसको यहाँ पे एक कलर करेक्शन लगा दूं फोरग्राउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, जस्ट टू आइडेंटिफाई। देखो ये मेरा फोरग्राउंड का पोर्शन है। अगर मैं ये मास्क हटा दूंगा तो कंप्लीट मेरा फोरग्राउंड है, लेकिन मास्क लगाऊंगा तो सर्टेन जगह के थ्रू से, मास्क के एरिया के थ्रू से फोरग्राउंड दिख रहा है, ए ओवर बी। तो अब जो है मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो क्या करूंगा, इसको साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, तो उतना सा एरिया में हो रहा है। या तो मैं राइट साइड में भी ले जाता हूं। तो अभी आपको पता चल गया होगा, तो मैं कलर करेक्शन निकाल देता हूं। थोड़ा सा एक्स में एंड वाई में मैंने कर लिया। सो ये आप ऐसा कर सकते हो। और दूसरा है, यहाँ पे मर्ज को आप फेदर दे दो। न्यूक में एक बहुत अच्छा भी ऑप्शन आता है जिसके अंदर ये डबल पॉली बोलते हैं इसको, इससे आपका फेदर भी हो जाता है क्रिएट। एंड एक्स्ट्रा
ब्लर भी दे दो थोड़ा सा, मे बी 10 पिक्सल का। सो उसके बाद क्या, ये पूरा ब्लेंड हो जाएगा आपका। सो इस तरीके से आपने क्या किया, अब आप ये जो है आपने लगा तो दिया, लेकिन ये शेप भी तो मूव होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 50 फ्रेम का रोटोस्कोपी नहीं करके, मूव नहीं करके, देखो नहीं तो क्या हो रहा है, ये उधर ही अटका पड़ा है, ऐसा हो जाएगा। सो इसलिए आप इसको मूव मैनुअली ना करते हुए, इसलिए हम लोग ट्रैकिंग करते हैं। और जो ट्रैकर मैंने यहाँ पे निकाला था, ये इंफॉर्मेशन मुझे कंट्रोल सी कॉपी करता हूं। मैं इस ट्रैकर को छेड़ूंगा नहीं, ये ओरिजिनल है। मैं यहाँ पे सेपरेटली इसको रख दूंगा एंड यहाँ पे आने के बाद इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मुझे इंस्ट्रक्शन देना है इस ट्रैकर को कि भाई मेरा जो पहला फ्रेम है वो सही है, सेट टू द करंट फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम, मतलब मैं पहले फ्रेम में ही अपना मास्क वगैरह सब ड्रॉ किया था, एंड यहाँ पे मुझे मैच मूव करना है। सो अब क्या हो जाएगा, आपका ट्रैकर जो है वो मूव करने लगेगा साथ में। और मैं आपको कंपेयर भी दिखा देता हूं। 1 सो ये ओरिजिनल एंड ये अभी करने के बाद। सो 1 2 दिस इज द डिफरेंस। सो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो, हर एक इंडिविजुअल जो पॉइंट्स है उसको ट्रैक करके आप क्लियर कर सकते हो। सो मैंने ये ट्रैक जो है यहाँ पे करके रखा है। इस जगह से मैं कॉपी कलर में, तो इतने सारे करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो मैं ये फ्लो उठा के बीच में लगा दे रहा हूं। सेम फ्लो है, उसी को कॉपी पेस्ट रिपीट करते जाना पड़ेगा, सेम फ्लो। सो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूं। तो अभी जो किया है उसको मैं निकाल देता हूं, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। ये प्रोसेस सेम है, रिपीट है खाली। सो ये आपका मेन फ्लो है, यहां से इसको लगेगा कनेक्शन, और ये जो कनेक्शन है बी, ये यहां पे लगेगा, और यहां पे ए। सो अब इसको थोड़ा अच्छे से सजा लेते हैं। सो अभी क्या हो गया कि मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूं स्टेप बाय स्टेप। सो कहां पे क्या क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट, यहां पे पहला पॉइंट यहां पे डिलीट हुआ, ये वाले मर्ज में, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे मैं यहां पे डिलीट किया, ये ट्रैकर अननेसेसरी साइड में लगा, यहां पे लगाया। थर्ड इज दिस वन, फोर्थ इज दिस वन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। लोग क्या करते हैं कि एक साथ पूरे के पूरे पॉइंट्स करने की कोशिश करते हैं। तो पूरे के पूरे पॉइंट्स एक साथ, डोंट थिंक लाइक दैट कि आप एक ही टूल लोगे और पूरा का पूरा VFX शॉट बन जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। यू हैव टू वर्क पोर्शन बाय पोर्शन, एंड इट टेक्स पेशेंस एंड एफर्ट्स टू डिलीवर ए VFX शॉट। सो इस तरह से पूरा फेस क्लियर हो गया। फेस क्लियर होने के बाद नाउ इट कम्स दैट फायर वाला इफेक्ट, and if you want to paste some cut or something, you can use it. So ये अगर आपके पास फायर बना हुआ वीडियो है तो फायर वाला वीडियो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
So this effect actually hardly it takes 15 to 20 minutes to actually do small things, and बहुत high end भी नहीं दिखा रहा हूँ because new joinees are there, so you know this should be just आपको concept समझ में आना चाहिए, तो उसके बाद आपको कोई भी work करो इस तरीके से आपका flows होने चाहिए. So this is new software. You can do these things, similar things in After Effects also. उसमें भी planner tracker करके आप कर सकते हो. बट यहाँ पे आप 3D ट्रैकिंग करने जाओगे तो यहाँ पे आपको मुश्किल होगा बिकॉज इट विल नॉट बी ट्रैक, बिकॉज पीछे का जो बैकग्राउंड है वो फ्लैट है, एंड 3D ट्रैकिंग ऑलवेज टेक्स द ओवरऑल फुटेजेस एंड कैमरा मूवमेंट हो तो 3D ट्रैकिंग बेस्ट है. एडवांस 3D ट्रैकिंग, कोई पर्टिकुलर प्लेन मूव हो रहा है जैसे फेस इसका एक प्लेन है तो प्लानर ट्रैकर है, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स मूव हो रहा है तो सिंपल ट्रैकिंग आप यूज कर सकते हो. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Okay, so regarding this flow or nuke, Arindam sir, I have a question for you. You may choose to answer that maybe in a single word, or you could also choose to elaborate on that. Yes, sure. Is there any shortcut method for quality output? Is there any shortcut method for quality output? The shortcut, it's not a shortcut, in fact, it's a long cut. Your observation skills. Yes. Okay. It's your observation skills. So what happens, basically, I'd like to answer you, sir. Like, we go to the movie to see the movie and we enjoy our popcorn and, you know, we come back, right? With enjoying a good family time. So basically, if you are an artist, so you should always be like, okay, what should have been used? What kind of thing? So the query, the inside query will only make an artist, you know, quality artist, giving a quality work. So this thirst should always be there. So, but if you are just seeing like a layman term, so okay, but being in a field, we cannot be like a layman. So the basic thing is, and yeah, I have seen many students answering me like, sir, नहीं, हम लोग तो बॉलीवुड का देखते ही नहीं, हम लोग सिर्फ हॉलीवुड ही देखते हैं, हम लोग एवेंजर के अलावा बाकी कुछ नहीं देखते, हम लोग हनी सिंह के अलावा बाकी कुछ नहीं सुनते. तो ये जो this is just like, you know, fixing your lifestyle in a one particular way is, you know, आगे के लिए आउटपुट के लिए सर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. So if you are listening to Honey Singh, then you should be able to listening to, you know, Jagjit Singh also. So you cannot categorize anything because in your, you know, in our field, we have to be very observative. अगर एक ग्लास ऑफ वाटर भी है, अगर उसके थ्रू से लाइट आ रहा है तो कितना इंडेक्स उसका चेंज हो रहा है, लाइट का पर्सपेक्टिव कितना चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्शन कितना है, रिफ्लेक्शन कितना है. एक ग्लास है, अगर कांच का ग्लास है, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्रिलिक शीट का ग्लास है, अगर फाइबर ग्लास है उसका अलग होगा, एक स्टील का ग्लास का अलग होगा. So there would be a lot of scope for, you know, observations. So the more you observe, the more realistic scene you can create. Sometimes I have seen people just forget to put the shadows also. So why they forget to put the shadow, the basic shadow of a 3D object combined with live action, because they didn't feel that something is missing. So that is your inner sense or your observation skills. So that makes it. So I hope, sir, I have answered the question. Absolutely, sir. Thank you so much for this wonderful explanation. So what I understand in a nutshell is anything and everything around you, an artist should be observing, and this definitely would help them to create more realistic scenes, or maybe something which has an upper hand over other artists, or you know, they would always enhance their quality of work. Yes, sir. So whatever works they make, the first thing is the thing which I have shown today
is this VFX? No, this is not VFX. This is not very, everybody should make this. So this could be in your showreel. Okay, that is fine. But we can make some of the shots so realistic that they're not identifiable. Like, मतलब मैं अगर वो वीडियो देखता हूँ as a recruiter, तो मुझे समझ में नहीं आना चाहिए पहले ये किया क्या है बंदे ने, इसमें क्या किया है VFX. उसके बाद जब ब्रेकडाउन देखते हैं उसके बाद समझ में आता है अरे ये तो सब कुछ VFX में बनाया हुआ है. So there the completion of the goal of the artist is achieved. मतलब सामने वाले को पता ही ना चले पहली झलक में कि ये VFX का भी है. जब ब्रेकडाउन दिखा रहे, the breakdown is very must for your showreel. Any video without breakdown is like you might have seen. मैंने भी आप लोगों को दिखाया सब लोगों को कि जो भी मैंने works दिखा रहा हूँ या जो भी है उसके अंदर breakdowns बहुत सारे हैं, so that people can understand what exactly you have done. So this is the way. Yes, sir. Amol, sir. Sure, sir. Sure. Thank you so much for that. Excuse me. I feel there are a few questions. There was one question from Sanket, which you said that you would answer in a short time. So he says, what tips you would like to give to the students who want to be simulation artists, and which softwares would you suggest? For simulation artist is like, if I say about the tips, so you have to be very, like the way I have already told, you have to be very keen in observations. If a iron ball falls on the ground, what would be the physics? So you have to be very clear on physics. What would be the force of gravity? How much bouncy it would be? If an iron ball, a plastic ball, and a rubber ball bounces on the ground, so you need to feel that gravity, the heaviness, that thing. You have to have the physics sense. You have to observe a lot, because being a simulation artist, physics तो और observations तो और भी ज़्यादा है. Because अगर आप एक प्लास्टिक का कुछ ग्लास गिरा देते हो ऊपर से, maybe 10th floor से, how that will react, how a paper will react, and how a cupboard या एक लकड़ी का कुछ सामान या एक लोहे का सामान गिरा देते हो, तो how much difference it will be, whether there will be wind deflection or not, whether there will be resistance or not, why a paper floats, why it will reach the ground very slow, because there are wind deflections and paper का size क्या है उसके ऊपर भी है. तो ये सारी physics जो है, this has to be realized. So for a simulation artist, ये physics आपका बहुत important है. अगर hair है, character का hair है, animal का hair है, तो it should be bouncy, कितना gravity है. अगर बहुत ही soft दिखाना है, तो how much secondary animation is there? Secondary animation मतलब bounce होने के बाद भी कितना bounce हो रहा है. तो ये सारी चीजें आपको बहुत observe करना पड़ेगा. And the second thing is, you have to keep on trying, because you have to have a good machines, and जो बार बार आपको क्या बोलते हैं, जो सीन होता है, like जो आपका सीन है उसको आप किस तरीके से देख रहे हो, उसका जो फ्लो है वो किस तरीके से दिख रहा है. So that is one of the very important thing. Okay, sir. Next question. What will be what should be included in compositing showreel as a fresher? Sorry? What should be included in compositing showreel as a fresher? As a fresher. So basically, if you are working for a compositing showreel, then 1 or 2 shots of rotoscopy is must, where you can show that you are able to create a masking, rotoscopy, and then your paint and clean up. Some area you can clean up, and kind of this kind of face cleanup is okay. And so that's why I took this topic, because you can clean up the things. So these are kind of major things you can have on your showreel, and one simple composition of shot.
creating various elements and mixing it into live action. So 3 shots will be enough with breakdown. Breakdown is compulsory, and when you start your showreel, just make sure आपका जो कंपनी है वो क्या मांग रहा है. If are they asking for cleanup artist? Are they asking for roto artist? What is that? So the major thing is, अगर paint and cleanup बोला हुआ है, so first thing will be your paint and cleanup showreel in the first. Don't make it very text को बहुत dancing करा के मत दिखाइए. Keep it simple and with black background, simple thing. And उसके अंदर first will be your paint showreel, then your name and then your number. First plate पे. सबसे end में जाते हैं जब, तब same thing, but उसमें आपको फिर से शोरील लिखने की जरूरत नहीं. आपका नेम, नंबर एंड ईमेल आईडी दे दीजिए. दैट विल बी एनफ. सो इन द फर्स्ट एंड इन द लास्ट, एंड जो आप वीडियो फाइल भेजते हो किसी को, मतलब लाइक लिंक दे रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका जो है वो डिटेल्स वहां पे रहे. सो इजी एक्सेस रहता है, बिकॉज कॉन्टैक्ट्स करना बहुत जरूरी हो जाता है. सो दिस इज द मेन थिंग्स विच यू शुड इंक्लूड इनटू द शोरील. हाँ, पेंट का, रोटो का शोरील मांगा है उन्होंने, आप 3D का भेज रहे हो, सारे चीज कंपाइल करके भेज रहे हो. डोंट डू दैट. Nobody has so much time. And जो आपका बेस्ट शॉट है वो आगे की तरफ रखो. Because after 1 or 2 minutes, the interviewer or the supervisor, he already has decided whether to call you or not to call you. So this is the main thing. And keep your music a bit suppressed. Yeah. May I have the next question? Okay, sir. Next question. What major challenges and problems do you face at your last positions, means in your career? In my last position. Yes, sir. And also in your career. Okay. What are the challenges? As I told, the challenges initially was like internet and all these things were not so much. And initially I have to learn a lot the production process. आप कितना भी ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ के आओ, कहीं से भी पढ़ के आओ, लेकिन until unless you actually land up in the war zone, you don't understand what exactly the requirements are. So कितना भी आप कुछ भी कर लो, so in the field you will learn something, experience something new, definitely. And what were the challenges? Challenges are like last movie which I had worked for was Fan. So the challenges was, it was every time Red Chillies takes up a new challenge, whether it could be Ravan, Fan or Zero. So Fan के टाइम पे क्या हुआ था कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि बॉडी श्रिंक करके पूरा एंटर द सीन क्रिएट करना होता है. सो उसके अंदर ये हो रहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्शन लेवल पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ. वी इवन चेक ग्रेन्स, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं कैमरा के, हम लोग वो भी मैच करके देखते, उसमें भी डिफरेंस नहीं आनी चाहिए. अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है, दैट इज नॉट द क्वालिटी वी आर एक्सपेक्टिंग. सो वी चेक इन ग्रेन लेवल. तो ग्रेन मतलब छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू के डॉट्स आएंगे. तो नाइट सीन्स में ज्यादातर आपके मोबाइल्स वगैरह में भी ग्रेन्स आते होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सो उसमें क्या हो रहा था कि फर्स्ट टाइम इतने सारे 100 पिक्सल्स 200 पिक्सल्स पूरा रीजनरेट करना पड़ रहा था बॉडी के साइड से. तो कभी कभी वो प्रॉब्लम होता है. पीछे बहुत सारे कैरेक्टर्स भी आपने देखा होगा, जो मन्नत बिल्डिंग के सामने क्राउड के अंदर गौरव खड़ा था, तो उसके अंदर बहुत सारे क्राउड कैरेक्टर था, किसी का हाथ जा रहा था, तो वो सब भी रिक्रिएट करना पड़ा था. तो that was one of the challenging tasks. Yeah, can we have the next question? Yes, sir. Thank you. What is the average salary of a VFX artist and also as a fresher? As a fresher, I will say that you may get, depends on your opportunity. If you are joining a multinational company and the salary could be good enough, and that could be somewhere around, depends on how the position is. Whether that time the company wants you more than you want the company, then the salaries are can be expected to be much better, and that could be around 20-25, something like that. And if you join a small company, then it may be vary somewhere around. So that depends all on the opportunity and the way of skills you possess and the way you bargain with the human resource person. That is a complete thing. So it's everyone's thing. Scenarios are different. Yes. Yes, sir.
Next question. Have you ever worked in gaming industry? No, not yet. I have not got into gaming industry. So. Okay, sir, I have one question. Yeah, please. We just saw one shot of Shahrukh movie कि बॉम्बे में आपने बोला कि एक शूटिंग हुआ था बॉम्बे में एक स्टूडियो में और उसका जो था वो लोकेशन अब्रॉड वगैरह वो दिखाया था 3D में वगैरह सारा राइट सो वो जो सीन था जो शूट किया था रियल शूट जिसे हम बोलते हैं कि रियल शूट था विद क्रोमा सेटअप एंड ऑल वो कैमरा रियल शूट का कैमरा है वो कैमरा एंड 3D आर्टिस्ट जो है जो एज अ मॉडलर में काम कर रहा हूँ एज अ मॉडलर तो 3D मॉडलिंग में मैं वही कैमरा सेटिंग्स एंड वही ट्रांसलेट वो कैसे हम मैच करते हैं 3D एंड रियल फुटेज. Okay, so in such kind of bigger production movies, what I will just tell you, just give me a second. Yeah, so I'll tell you that जो शूट होती है ना जहाँ पे तो वहां पे बहुत सारे के सारे रेफरेंस इमेजेस लिया जाता है फोटोग्राफ्स बहुत हाई एंड HDR फोटोग्राफ्स लिया जाता है और एक तरीके से नहीं चारों तरीके से तो इतने सारे इंफॉर्मेशन हो जाता है उसको मैच मूविंग सॉफ्टवेयर में ले जाया जाता है इंफॉर्मेशन उसको ट्रैक किया जाता है तो इनफैक्ट एक पूरे के पूरे पॉइंट क्लाउड्स बन जाते हैं और पूरा रियलिस्टिक जिस तरीके से वो घर है उसका जो रूफ है जिस तरीके से वो स्लैंटेड है वो सारी चीजें वैसे ही पूरा का पूरा पॉइंट क्लाउड इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और इतने सारे पॉइंट क्लाउड्स होने के बाद तो वो पूरा का पूरा 100% मैच होता है कैमरा उसके साथ मैच मूविंग सॉफ्टवेयर में देन वो कैमरा को माया के सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर दिया जाता है सो दैट उसके बाद जो भी आप माया का सीन है उसके अंदर माया का जो कैमरा है वो उस तरीके से मूव करेगा एज पर द रियल कैमरा. ओके मतलब जो कैमरा रियल शूट का कैमरा जो है उसके लोकेशन है मूवमेंट है उसके रोटेशन है जो भी कुछ उसका मूवमेंट हो रहा है वो सारा एज अ ट्रैक्टर के साथ वो माया में इंपोर्ट करते हैं पूरा उसका इंफॉर्मेशन है कैमरा का जैसे कि खाली शूट हो रहा है राइट तो शूट में जो मेन कैमरा है ठीक है उसका तो मोशन है ही हम लोग क्या करते हैं जनरली लो एंड पे क्या करते हैं उस कैमरा को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पे जैसे हाई एंड प्रोडक्शन है तो इसमें क्या करते हैं वो खाली उस कैमरा का डिपेंडेंसी नहीं रहते वो लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा एंटायर जो लोकेशन है वो पूरा का पूरा शॉट लेते हैं किससे अपना DSLR टाइप का कैमरा होता है ना जिससे बहुत हाई एंड HDR कैमरा होते हैं उसे पूरा का पूरा लोकेशन का शॉट लेते हैं हर एक एंगल से जो जिस जगह पे लोकेशन पे काम हो रहा है मतलब वो रूफ टॉप में तो वहां पे क्या हो रहा है कि सारे जो रेफरेंस इमेजेस 360 पूरा का पूरा एंटायरली रेफरेंस इमेजेस लिया जाता है वो रेफरेंस इमेजेस को मर्ज किया जाता है आपके मैच मूव के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं मैच मूविंग ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके अंदर सारे रेफरेंस इमेज को मैच किया जाता है देन उसके जो इंफॉर्मेशन है मतलब ये अगर वॉल है तो वॉल के अंदर वो दूसरे कैमरा से कैसा आ रहा है वॉल तो पर्सपेक्टिव आएगा सॉरी फर्स्ट सामने से क्या आ रहा है वॉल स्ट्रेट आएगा दूसरे एंगल से क्या है वॉल फिर से पर्सपेक्टिव आएगा तो ऐसा 360 फुटेजेस लिया जाता है उन 360 फुटेजेस से इंफॉर्मेशन मतलब पॉइंट्स क्लाउड होते हैं छोटे छोटे जो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन होता है वो सबको कंबाइन किया जाता है मैच मूविंग सॉफ्टवेयर में देन फाइनल जो मेन कैमरा है उसको ट्रैक किया जाता है तो इतने सारे रेफरेंस के बाद जो है वो अपना कैमरा जो जनरेट होगा इंफॉर्मेशन वो एकदम 100% रियलिस्टिक निकलता है तो वो जो कैमरा जनरेट हुआ है फेक वाला उसको हम लोग माया में इंपोर्ट कर ले जाएंगे और माया में फिर जो भी आपका मॉडल है उसके ऊपर वो कैमरा घुमाएंगे तो 100% मैच करेगा. ओके ओके सर थैंक यू सो मच. आई होप मैं क्लियर आपको मतलब कर पाया. हाँ बाकी एज अ मॉडल क्योंकि क्या है बहुत से बच्चे जो है अभी एज अ मॉडलिंग वो करते हैं या तो मॉडलर हम करते हैं तो वो उनको समझ में आता है कि बहुत बार रियल फुटेजेस को वो 3D में कैसे कन्वर्ट करे या उनके साथ कैसे मैच करे एज अ मॉडलिंग जो है हमारा वो सब कैमरा सेटिंग. ओके सो मॉडलिंग के लिए एज यू नो दैट कि 100% मैच कैसे करें उसके लिए आपको बहुत सारे रेफरेंस फुटेज चाहिए. हम लोग जनरली क्या करते हैं टॉप फ्रंट बैक टॉप ये सब करके छोड़ देते हैं. उसके अलावा भी हम लोग और भी रेफरेंस फुटेज ले सकते हैं. सो एवरी फुटेज मे हैव गॉट सम इंफॉर्मेशन जो हम लोग को कभी-कभी सिर्फ पर्सपेक्टिव एंगल से नहीं मिलते मतलब सॉरी फ्रंट लेफ्ट राइट से नहीं मिलते.
तो वो सारे चीजों को इन्फॉर्मेशन जब लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि रियल जो कैमरा है उसको बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर में ले जाना पड़ता है, मतलब मैच मूव, पीएफ ट्रैक, इक्वलाइजर, 3D इक्वलाइजर, दिस काइंड ऑफ मैच मूव जो कैमरा ट्रैकिंग होती है ना, इसके अंदर वो सिर्फ कैमरा बेस्ड नहीं होता है, वो रेफरेंस इमेज भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उसके अंदर इन्फॉर्मेशन। तो वो सारे इंफॉर्मेशन, सारे एंगल्स को लेके फिर वो पूरा एक दुनिया, मतलब वर्ल्ड जनरेट कर लेता है जिसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट क्लाउड्स रहते हैं। देन उसके बाद वो कैमरा अच्छे से मूव होता है। तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है डायरेक्टली माया में ले गए या 3D मैक्स में लेके ट्रैक कर लिया या न्यूक में लेके ट्रैक कर लिया, वो बहुत हाई एंड हो जाता है ट्रैकिंग के लिए। तो पूरा वर्ल्ड जनरेट ही कर देता है सारी इंफॉर्मेशन के साथ। मतलब मैं अगर यहाँ पे हाथ रखा हूं तो आपको शायद समझ में नहीं आया कि कितना डिस्टेंस में है कैमरा से, लेकिन मैं अगर सेकेंडरी कैमरा साइड प्रोफाइल में रख दूं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको लैपटॉप का कैमरा और मेरे हाथ का डिस्टेंस आपको समझ में आ गया, राइट, कितना डिस्टेंस है ये। तो दिस द वे द टेक्निक वर्क्स, पूरा 360 कैमरा लगा के पूरा उसको इंफॉर्मेशन लेते। Okay, sir. Thank you so much for such a wonderful information. और कुछ questions है? Arindam sir, I have one more question for you. Yes, sir. Before working on any shot, say let's consider one of those shots that you showed in the breakdown. शाहरुख खान का एक शॉट दिखाया था जिसमें उसकी नाक थोड़ी स्लिम की थी. There were some modifications done to his face. Okay. Right. So right. before working on it, how do you receive that information, and from whom do you receive that information? Is it explained to you verbally? Do you receive in the form of a textual form, or is there any other method that you receive the information and then you start working? Okay, so basically before working there are a lot of brainstorming and meetings and everything keeps on going on. So we attend being a senior artist, we always have to be in the meeting and preview sessions and all, and we have to understand basically that time we have to understand the instructions. Generally instructions and guidance was given by Hari Shingorani. He's handling the Red Chili's VFX aspects. So basically we have to understand, okay, the nose is to be straightened, and this kind of nose are we have to understand the whole process. So this has to go to the 3D, and then they will be trying it out and fixing it and match moving, and after that they will give us the passes and we'll fix the nose over there. Before that we need to remove the second nose, because otherwise क्या होगा, अगर फ्लैट है ज्यादा नोज एंड उसके ऊपर पतला नोज आ रहा है तो फ्लैट वाला नोज दिखेगा. सो यू हैव टू क्लीन द रियल नोज ऑल्सो. तो ये पोर्शन पूरा क्लीन अप हो जाएगा, जैसे मैंने अभी फेस ट्रैकिंग दिखाया उस तरीके से क्लीन अप हो जाएगा, उसके ऊपर नोज आएगा. तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है स्टार्टिंग से बीइंग इनटू द प्रोजेक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो शॉट का जब SOW आता है, प्रोडक्शन से शीट आ जाता है, उसके अंदर SOW of the shot, that is scope of work for the shot, is one could be your face cleanup, the 3D nose, and अगर पीछे ग्रीन स्क्रीन वगैरह कुछ है तो वो मतलब जूनियर आर्टिस्ट को दे दिया जाता है. So any compositor has to work on these two aspects, mainly for the face cleanup and the fixing the nose. तो ये स्कोप ऑफ वर्क एक पूरा शीट डेटा मेंटेन किया जाता है प्रोडक्शन की तरफ से, एंड एवरीबडी नोज व्हिच शॉट. देयर आर लाइनअप्स भी रहते हैं उसके अंदर, जहां पे हम लोग वीडियोस भी चेक कर सकते हैं कौन सा वीडियो में क्या हो रहा है, इसके बाद क्या होने वाला है. अरे यहाँ पे नोज और यहाँ का नोज में डिफरेंस दिख रहा है, भाई नोज ठीक करो. तो पहले वाला शॉट का नोज ज्यादा सही लग रहा है तो सेकंड वाला शॉट का चेक करो, उसको सही करो. तो दिस ऑल टैलीज आर देयर. सो वी हैव टू बी completely not like कि हाँ ये मेरा शॉट है मैं इसको करके निकल जाऊंगा घर, तो वैसे नहीं चलता है. It has to be completely, we have to be into that process. So for a long time, 1 year 2 year ऐसे. Yeah, so आप basically ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मेरा office work hours are 9 to 5 and I have finished my job, I'll go home now. No, you have to leave those days like. Yeah. So right. I just tell you my experience because I was handling most of the face cleanup things for Ravan. तो उसमें क्या होता है, that time I was in Prana, and since I have good experience in CGI, मतलब CGI मतलब जैसे Tinkerbell टाइप के जो प्रोजेक्ट्स है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि
I was handling all this face replacement कि किस तरीके से mainly मतलब I was working on that. So उस time पे ऐसा हुआ था कि initially बहुत low work था, तो gradually मैं आपको अपना story बता देता हूँ. So initially तो बहुत कम work था, कुछ अपने time पे आओ जाओ shift में सब. तो दूसरा बंदा आके खड़ा रहता था, भाई खाली करो, मैं अच्छा है कर जाओ. So धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते time came when I was there for around 25 days continuous. So continuously 25 days वहाँ पे मैं रुका था. मैं अपने बैग में कपड़े वपड़े जैसा. When I went back home, तो I had 3 bags and sleeping bags and everything was there. So we were there always because initially क्या होता था, traveling in Mumbai is very hectic with local train and all, and you know that if you use your private vehicle, it is going to consume so much of time. And after all the night works and 2-3 days work, if you are traveling back home and again you have to come back office to attend the shots. So that time what happens is like traveling takes a lot of time and patience. So I started, everybody started staying in the office. So it's like family. तो एक फैमिली की तरह हो जाता है पूरा. वी आर स्लीपिंग ऑन देयर ओनली. तो अभी बीच में डिस्कवरी या बीबीसी वाले कुछ तो आए थे बीच में, वो लोग भी शूट कर रहे थे, तो आप लोग सब सोए पड़े हुए, किसी को पता ही नहीं कोई शूट करके जा रहा है. तो द सीन्स आर लाइक दैट. बट बिकॉज इट्स लाइक व्हेन अ न्यू मूवी इज बॉर्न, इट्स लाइक अ चाइल्ड बॉर्न. सो हम लोग को बहुत खुशी होती है उस टाइम पे कि लाइक देयर इज सम कंट्रीब्यूशन इन दिस मूवी आल्सो. So we feel great, but yes, sometimes it has to be real challenges because the number of VFX shots and the days sometimes it gives crunch. So you have to be very dedicated to your work, and commitments is very essential. Absolutely, totally agree with you, sir. One last question from me, and then I'll hand over to the students if they have any questions. Sure. Has it ever happened that you received certain instructions from the production team or your boss for that matter, saying that we have so and so scene to be done? You received the relevant information also, but you ended up doing something else by mistake, and that something else turned out to be even better. Actually. It happened in Ravan time. So actually that time my sequence lead, the lead gave me one shot. It was like what is it, complete CST, the VD station of Mumbai. It was collapsing, and the train is coming out of the scene, and there was all the coconut trees, I guess it was there. So how the coconut trees leaves are there, like very fine and lengthy and pointed and all. So what happened, that time my superior gave me that shot, and he said that, see, this is the shot, we have to give it by tomorrow morning. The roto artist couldn't roto it so many leaves. It's not possible for him. The junior pumper also is not, he doesn't know how to remove it. So whatever it takes, just finish the shot. I just thought कि अब तो गए, मतलब नहीं होने वाला है, हो गया फेलियर, यहीं पे अपना जो है खत्म कहानी. तो क्योंकि सी किसी के साथ किसी का पर्सनली ऐसा कुछ नहीं रहता, बट यस, इफ देयर द शॉट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टुमारो, तो इट हैज टू गो. सो ऐसे टाइम पे समहाउ what I did, I don't know. Night shift was there. Some portion I had to do roto, some portion I had to do it with luma keyer, मतलब की करके थोड़ा सा निकालना, थोड़ा सा बहुत छोटे छोटे पोर्शंस पे बहुत अलग अलग वर्क किया. And in the morning I was like, पता नहीं अब तो सुनना पड़ेगा अच्छा खासा. He said, wow, you have done the shot. I was not expecting. I thought I would have given it one day more, but मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि कल सुबह तक दे देना. So it was like that. So that was one of the experience. Okay. Wonderful, sir. Thank you so much for sharing that with us. Ankit sir, anything from you or
shall we hand it over to the students? No, let students take it over. Okay. Amrita, Kimaya. Yes, sir. Good afternoon, everyone. I, Kimaya Mahajan, would like to thank Mr. Arindam Das on behalf of the Animation Department for enlightening us with your immense knowledge. Today's lecture was very insightful. Thank you for demonstrating the 3D trafficking. I'm extremely sorry, sir. Thank you for demonstrating 3D tracking. It was very fascinating. Once again, I would like to show a hearty thanks for sparing your time from your busy schedule and enlightening us with your precious knowledge. Finally, I would like to thank our faculty members for arranging this opportunity for us to learn. Also, I would like to thank all of you present here for your keen and patient listening. Thank you. Thank you so much, everyone, and especially to Sir and Suryadatta Groups. Thank you very much, sir. Thank you. It was really very enlightening and informative for all of us. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you. Students will be sharing feedback form. Okay. I want everyone to fill that form on priority. Okay. Amol sir. Yeah. So I'll share the form. बच्चों को so that they can fill the feedback forms and send it to us. Sure. I'll share that on the groups itself. WhatsApp. WhatsApp groups. Share and fill it up in priority way. It's just about 5 minutes that you would require to fill up that form. So as soon as I share it, start filling up the forms. Okay. Yeah. So we can end the session. Sure. Yeah. Vishal sir. Yeah. Yes, sir. Session end कर देते हैं, recording बंद करके. Yeah. Okay, fine. Yep. Thank you.